So we'll begin with the presentation. As of now, we have 11 participants. Yeah, I guess it will be 11 participants. Okay, so yes. So Abhishek, we'll start with the presentation. We'll just give a brief idea of the last week's presentation. Yes, and this is a continuation. Abhishek, your voice is not audible. Yeah, I said thank you, Adrian, and good evening to all of you. And thank you for again coming for this second part of this presentation. So I will just take like 2 to 3 minutes to introduce you what we have discussed in the last presentation, and this is a continuation of this. So in the last, we discussed about what we understand as investors and traders. We also consider time horizon as one of the parameter to distinguish with these people, and also upon their trading style. We also discuss about we call this like what we need to understand as a investor, that always is a belief that investors uh, are always passive investment. They always do passive investment. वो एक stock ले लेते हैं and they hold the stock for the long term, and that's what we called as investor. And we have a belief in tendency that traders are also always active management. They always buy sell trades, so short term में काटते हैं. But we disbelieve that we got to know that there is a called strategic blend. Like most of these big players, investors generally, they at certain point of time, according to the market scenario, according to their risk appetite, according to various scenarios, they change their style of trading. Sometimes they will be active trading, and sometimes they'll be sitting just as a passive management. And same goes with the traders. Sometimes they always don't need to rush their buying and selling. They can be sitting passive. They will just buy a stock and hold for some time, and for some point of time when the market gives a lot of volatility and they see a lot of opportunity, they will be shifting towards active management. So that's what we have discussed in the last presentation, and we got a lot of question about like how we as a person will able to achieve these kind of targets, and that's why we has concluded to the second presentation. So let's start with the first question. Adin, if you don't mind, I will show you the first question, and Yes, yes, you share the first question. so the first question in our series: did India's wealthiest investors begin as a traders or a long-term investors? So at any point of time, you guys feel that you want to share your insight, or you have any kind of question, you can just unmute yourself and ask a doubt. So I will be favor for this. I believe that um, no wealthy traders start as a long-term investment. They basically start as a traders and then they went to the long-term, and Aiden will be against on that fact. So let's start with the favor of this, why I feel that they started as a traders. So I have a very uh, simple viewpoint of how Rakesh Jhunjhunwala started this. I know I have, displayed this thing in the year in our previous webinar, but I again want to start because the question is somewhere similar to what we have discussed, last presentation. So we all know that as of now, Rakesh Jhunjhunwala started with 5,000 rupees. As his initial career, he able to bring 5,000 rupees from one of his friend, and later on that with the time span of 1985 to 1989, uh, he has basically able to capture some very good short-term gains. And because in just a time span of 3 to 4 years, he has a capital of 20 to 25 lakh rupees. Trust me, that amount is such a huge amount at that time. It's the time value of that money at the time was very huge. So with the short-term gains in just 3 to 4 years, he is able to capitalize a very good amount of money, especially with the active trading he has discussed. And he also called in his once he got interviewed in 2016. So he told that for his career building, trading was his mother for of his success. I just wanted to show a trading book of Rakesh Jhunjhunwala to validate my point. Why I say this? So let me take a pen. Okay, fine. So you see a lot of believes that राकेश झुंझुनवाला तो इन्वेस्टर है तो उसने से बाय एंड होल्ड किया होगा. So मैं 2016 की ये ईयर बुक है.
If somebody has doubted what is YECP, this is year end capitalized price, मतलब जो year end में last price होता है. So you see this Diwan Housing Finance Corporation, उन्होंने somewhere around 10 lakhs shares लिए हैं. And if you see that within a just span of 6 days, he built a profit of what 15 crore and he's exited from the position. He entered at 205 and he exited at 220, 6 days. So with this definition, what we have learned so far that he must be not be trader. A lot of people say that Rakesh Jhunjhunwala is an investor nowadays. No, he's not. He also did. That's what we discussed in the earlier presentation. That sometimes these players also active as active management and sometimes the passive. You may be seeing that there are a lot of stocks in his portfolio where he hold for such a long time, but in certain time with the market scenarios and some point of time he see the opportunity, he has also done a trading and gains a substantial amount. So this is the his money he has earned from the trading. As of now, anyone has doubt, I would love to hear somebody's insight on this. No, but we okay. I have something to add. So we know Rakesh Jhunjhunwala is investor, right? Here No, you are, we don't know. you That's what are, my point is. No? We yeah, we you. believe that he was investor, but my point is that he was not investor. He done some kind of very rigorously active trading in his lifetime. Correct, but the wealth that he has majorly built, which is one stock that we all know, Titan. And now, if you see, he is known as the big bull or occasion because of that stock, right? But Mm-hmm. inherently, what I personally feel is no one can be a lifelong investor. Like, no one can hold all the stocks forever. Mm-hmm. So what is the question here? No, no, no. That's just what something I wanted to add. Okay. अच्छा, मुझे एक बात पूछना था। Yeah, Indrajit. एक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी जानकारी के अनुसार राकेश झुनझुनवाला के ब्रदर वो सीए थे। Mm-hmm. तो ऐसा है कि उनसे भी इनसाइडर जो भी न्यूज़ है वो उनको मिलती थी। Mm-hmm. तो उस कारण वो वही शेयर खरीदते थे जो इनसाइडर न्यूज़ में वो बाय करते थे। क्योंकि Yes. उनके उनके अकाउंट जो उनके ब्रदर थे जो सीए थे, उनके पास Mm-hmm. बहुत सारी ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं उनके अकाउंट्स और जब जो भी बैलेंस शीट थी, सब उनके पास Mm-hmm. थी। तो वो एक अंदाज़ा उनको लगता था कि ये कंपनी ऊपर जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है। या इंद्रजीत, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, मैंने यही इसीलिए बोला कि वो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये नहीं वो कैसे करते थे, माय पॉइंट इज जस्ट टू हुँ, हाईलाइट वो करते थे because we हाँ। believe that he was investors. My point is to show that he was not investors. That's why I told you markets को देख के करते थे, किसी manipulation से करते थे. We are not here to discuss कि वो कैसे करते थे, but my point is to prove that he has done active trading rigorously. उन्होंने काफी काफी stocks जब in 2018 का अगर if you see this book trading book, so उन्होंने 2 days में भी stock को buy and sell करके exit किया और huge amount of profit कमाया. So that's what the point is. Yeah, but I appreciated that you give some insight on it. नहीं तो मैं आपकी बात समझ गया कि वो एक इन्वेस्टर भी थे, एक ट्रेडर भी थे। ये तो Mhm. हम मानते हैं। Mhm. लेकिन जो यानी एक हमारा ये कहना है ना कि जो भी मार्केट में आता है, उसे या तो ट्रेडर होना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना चाहिए, बराबर? Mhm. ठीक है। लेकिन उसके पास उसका जो ब्रदर था, जो सीए था, उसी से उनको इनसाइडर मिलता था। अगर ऐसा ब्रदर हमारे पास रहता है और हमें अगर ऐसा इनसाइडर अगर हमें मिलता है, तो हम भी राकेश झुनझुनवाला बन जाएँगे। Yeah, I mean, it's very difficult in today's market to have a brother like that, and you will not get caught because a very simple example. अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड में I will tell you, एक्सिस म्यूचुअल फंड में उनका भी एक ऐसा ही था जो बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, वो अपने फैमिलीज को कॉल दिया करते थे कि ये बाय कर लो, वो सेल कर दो, एंड विद द टाइम स्पेंड ऑफ 2 years उन्होंने 70-80 करोड़ कमाया, बट सेबी हैज टेकन ऑल दिस मनी. सो अगर आप शॉर्टकट्स करते भी हो तो in this scenario जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन्वॉल्व है, I see your chances of getting caught is very high. So that's my point. नहीं ठीक है ना। बस नहीं, मेरा यही कहना है कि अगर ऐसा अगर उसको क्या बोलते हैं, एक ल एक एक यानी आपके सर पे अगर ऐसा कुछ हाथ हो, तो वो आदमी आगे बढ़ जाता है ना?
क्योंकि क्या इनसाइडर सब मिल रहा है और मेरे पास सपोज 1 लाख है तो फिर मैं 1 करोड़ आराम से बना सकता हूँ But see, या Anjanji, मुझे the point is that insider हाँ trading is illegal now. So why we are discussing about नहीं something which is illegal? नहीं मैं वो उस चीज़ के लिए नहीं डिस्कस हो रहा मुझे बस कि ट्रेडर फिर वो ट्रेडर और हम ट्रेडर में फिर बहुत फर्क हो जाएगा ना See, with the जैसे से ये वेबिनार आगे जाएगा, my point is to हाँ show कि ठीक है अगर एक ओके ट्रेडर भी है उसने कैसे पैसा कमाया, that's my point. But let's stick to something, क्योंकि वो मैं इस पे बात करना चाहूंगा भी, तो वो that is not legal in my हाँ terms. ठीक है बिल्कुल Let's not ठीक है discuss about it. Fine. So another more example of Radhakishan Damani. So we all know that he is a DMart founder. So a very similar story with this. He again in 1980 started with very small money. He came into the market with just 10,000 rupees. Again, he borrowed from his family. He said, "I want to do something in trading." And in lot of his interviews, he always said he is trader by you know nature, and then he's investors. And he also made initial money with the short selling when there was 1992 Harshad Mehta bubble crash. He did a lot of short selling and he is able to pull it. And later on, similar story like Rakesh Jhunjhunwala, he switches to long term investment. The amount from 10,000 he went to 12.5 cr, and then he switched to the long term investment. My single point is to show here a very famous interview taken in 2019 from Radhakishan Damani. He said a very beautiful line which support my stance, that why I feel that it is important to in your initial career to have a trader and then switch to the long term investment to build wealth like these people. He said in 20% of my wealth came from trading, the rest 80% came from investing, but without earning the first 20 I could not have made the next 80%, which shows that कि even he as a person believes that कि अगर वो 20% उन्होंने वो 10,000 से वो 12 करोड़ नहीं कमाए होते with short time bursts or trading skills से active management जैसी भी की होती, he could not be the Radhakishan Damani what he has as of now. So Adrian, I'm opening it to you, so you have any counterpoint to this? Before Adrian say anything, I would like to summarize what Abhishek have discussed, right? So, Abhishek, according to you, आपके हिसाब से wealthiest person वो है जो ट्रेडर है. Am I right getting the right thing or right wrong? They have started their journey as a trader. हाँ. So in a very close statement, अगर मैं single statement बोलना चाहूँ तो what is your statement towards this thing कि investor are the wealthiest or the trader are the wealthiest? See, again, this is a question that I'm not going to answer right now, because then the essence of this presentation will wane basically. So right as of now, I want to stick with the line that in your initial career, lot of these people have been trader and then they switch to long-term investment. ओके ओके सो माय पॉइंट आस्क इज दिस कि जितने भी ऑडियंस हैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन था कि अगर उन्हें अगर समझना है तो वो राकेश झुंझुनवाला या राधाकिशन दम्मानी को एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंसीडर करें जो उन्होंने पैसा बनाया उसके अकॉर्डिंग या फिर वो एज ए ट्रेडर उनको कंसीडर करें दैट इज द क्वेश्चन सो आई विल जस्ट ट्राई टू उनके लिए आस्क एक सिंपल सा आंसर मैं कोट कर देता हूँ, अगर उनको इस तरह हाँ बनना है तो मेरा व्यू पॉइंट है ये है कि दे हैव टू build a capital which can grow very fastly, and that's why we have put the second question कि वो कैसे लानी है, क्या करना है उस कैपिटल के साथ. But yes, a simple answer is that they had to start as a trader, do active management and then switch to long term investment अगर वैसा करना है. ओके ओके गाइस सो तो लाइक अभिषेक इज सेइंग कि initially they started their journey as a trader. Now Adrian will discuss about these कि अगर उन्हें agree करना है या whatever he's trying to say. So Adrian, you can continue. Later on, Yeah, Adrian, I'll continue. we will Yeah. yes. Later on, Adrian, we will discuss about these thing with the audience as well. कि अगर audience का कुछ Mhm. अपना point of view है, so we can discuss. So Adrian, We'll you catch can it. Once I complete it, we'll open it to the audience. Open to see yes yes what is their point of view. yes. But yeah, so before I just see, we are speaking for and against. Okay, so Abhishek spoke for, I'll be speaking against that. But as per my understanding, okay, what he said,
to build an initial capital. Okay, they started trading and then they moved towards investment. Okay, and then because of compounding, the investment grew a lot. Am I right, Abhishek? Because of compounding, because of their efforts into risk management and some companies wholly, and that's kind of story. Yes. Okay, correct, right? So, but if you see, okay, if you see this recent disclosure by SEBI, okay, so we all know like all the billionaires, okay, they made profit. Okay, initially they started trading, okay, and then they made a lot of profit through trading, and then they moved towards investment. Okay, so in that case, okay, much the starting wealth which they had came from trading, not from say from job or something. Okay, wherein they got the amount, it came from trading. Okay, and if you see all the billionaires, as you said, Rakesh Jhunjhunwala and Radhakishan Damani. Okay, but if you see SEBI circular, okay, which came out, this study from SEBI, it's not a circular study from SEBI. Okay, 9 out of 10 individuals they lose money in equity. Correct. So it is not every individual, okay, can use the mode of trading and gain some wealth. Okay, can the initial income wherein they can then invest in the stock market. So many of the people, many of them must have tried. Okay, if I see this report, many of them must have tried, but 9 of 10, 90% of people fail. Okay, in their trading journey. Okay, and they lose most of their capital. Okay, you can see all this thing what is mentioned over here. Okay. Even if I say in equity, okay, in equity intraday trading, okay, equity intraday trading, it's 7 out of 10 individuals. So it is 70% loss. Okay, 70 people lose money in the stock market. So these people who have gained okay money from trading okay in their initial years, they have made money because we can say one is their luck factor. That can be one thing. Okay, and second thing might be they may be having some strategy or something which have given them good returns. Or the biggest thing is discipline, you can say. Okay, many people gain from the stock market because of discipline. Okay, but many people also lose from the stock market. You can see in this report. Okay, so it's not okay. So my main thing is okay, since people are wealthy, okay, because initially they have traded, it's not necessary because of trading. Okay, you can gain your initial capital. Many people have lost okay because of trading, and that is my counterpoint for this. Yeah, Adrian. So Abhishek, Of course, trading requires a lot of skill set, and this is not everyone cups of tea. It takes a lot of time to get these kind of skills, and that's why you know once we are talking about Rakesh Jhunjhunwala or any kind of person who has built his wealth over a time with starting journey as a trading. There may be scenario that some has held from just like Inderjit told that उनका भी ऐसा भाई होना चाहिए तो मुझे लक मिल जाएगा. This that shows your scenario कि 10 में से 9 लोगों के पास लक नहीं है, only one is getting paid, and उसका भी जो वो कमा रहा है that is not huge that he can build wealth over it. So I do agree on that point of time that the trading required a lot of skills, and this is something one needs to conquer the skills with the time passage. And you can't just just sit in market for 1 to 2 years and you say that okay fine मैंने skill acquire कर लिया, now I will build a short term capital and then मैं उस capital को long term में लेके switch कर दूंगा. So yes, I even though my question wants to my answer was to you should start with traders, but I do agree that this is something somebody as a person who wanted to start this, it leads lots, basically needs lot of efforts, hard work into discipline. the market basically. Yeah. And also, see, one thing which I will not agree with Indrajit is like he said he had a brother which gave him some news, insider news, but I will not agree with that thing. The reason for that is because when you have such a thing and later on you're successful, okay, there is some reports like news reports or something which will come out saying Hmm. that the initial capital was gained through insider trading. As you have said, like Axis Bank, all these people, their news have come out. Okay, Hmm. it's because if you say like Rakesh Jhunjhunwala, then Radhakishan Damani, these are like well-known individuals in India. Yeah. So there will be some research on the background how they got that wealth.
Okay, so in that sense, I'll not agree with that thing, because if it was such a thing, then that would have been all over the news. Okay, and there would be like insider trading, all those things will be upon them, that they have done insider trading and gained all this wealth. Okay, and that would have put them behind bars or something. So that's the reason I'm not agreeing with that point. Yeah. So this is one thing. This is the first question. So we'll just open to the audience. If you have anything, Abhishek, apart from this, before we open to the audience. Yeah, you can open to the audience. We'll answer it. Yeah, Nishant. Yes. So, Adrian, can you please summarize your answer with respect to what have Abhishek said? So my summarize is that, see, 1% of the people, okay, they Hmm. can see, if you see both these personalities, okay, Radhakishan Damani and Rakesh Jhunjhunwala, both have started trading and using that wealth, what they have gained a profit from trading, they have put into investing. But that Hmm. is rare cases. Okay. Many of the individuals, they have use the same approach, started trading, okay, and then they can use that wealth to later on invest in the stock market. But if you see, 9 out of 10 individuals have lost in the stock market, okay, as per SEBI That report, is, and that is okay, what which you have report I've showed shown. with the SEBI data, right? Correct. Yeah. So it's not Okay. necessary that if you start trading, okay, you will gain profit, which can later use for investment. And you can become one of the top one of the top people, okay, who are actually billionaires. You cannot become that, okay, because many people are losing, and the reasons can vary for different individuals. So I can say like these two people, Radha Krishna and Rakesh Jhunjhunwala, they might be a luck factor, okay, which has favored them. Okay, there may be one top 1% individuals who have gained from the stock market and use the same amount to invest in the stock market and become billionaires. So that is my Okay. counterpoint here. Okay. Okay. So, is there any in the audience that want to share their view or try to share a different way they are thinking कि trader है wealthiest या फिर investor है? Is there anyone in the audience, guys? You can unmute yourself and start saying. I guess there is no one. But I would like to add a few things Indrajit, in this. Indrajit. Yes, Indrajit, you can say. मेरा ये नहीं कहना है कि इंसाइडर होते हैं करके, कुछ ना कुछ प्रकार से कुछ ना कुछ उनको मिलता है। अब ये कहीं न कहीं मैंने देखा है, इसलिए मैंने बोला। हाँ, उसका कुछ सबूत या कुछ ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं, ठीक है। लेकिन आपकी बात बराबर है कि जैसे भी यानी अपना जो डिस्कशन चल रहा है कि लक फैक्टर थोड़ा होता है। ये तो मैं मानता हूँ कि 1% 2% लक फैक्टर तो होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 50% का जो हिस्सा है ना, वो कहीं न कहीं न्यूज़ गैदर करता है, तब जाके कहीं कुछ ना कुछ आगे बढ़ता है। फिर अपने वो जो भी टेक्निकल, जो भी फंडामेंटल वो सब लगा लेता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो यही करता है। मैंने कुछ ऐसे भी ट्रेडर देखे हैं कि जो सच में ट्रेडर है, जो जॉब करते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कार्वी, हम्म। है ना? अभी वो बंद हो कार भी गया है। ब्रोकिंग, राइट, बंद अभी हो गया, अभी वो राइट। बंद हो गया है। हम्म। 2015-16 के दरमियान, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बंदा था जो कमोडिटी के लिए क्या बोलते हैं, जैसे अभी कोई भी अपन लगा दे तो कंपनी अपने को ये बताती है कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, बराबर है, सही है। तो वहाँ पे जो एक बंदा था वो कमोडिटी के लिए क्या बोलते कॉल्स देता था। सवेरे 10 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होता है तभी वो देता था, दोपहर को 3 बजे आता था, 15 मिनट वहां देता था, और शाम को आता था, वो 1 घंटे के लिए आता था। तो उसके पास नॉलेज था, और नॉलेज का बेनिफिट उसको ये मिलता था कि उसकी सैलरी भी इतनी थी कि वो बहुत सैलरी थी। लोग उसको, वो कार्वी के जो भी कुछ ग्रुप है, वो उसको सैलरी भी देते, एक वर्ल्ड टूर भी कराते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज है। लेकिन अगर सच में इतना है तो फिर ये लोग, जिसके पास है ना, वो आगे नहीं आता है, वो छुप के बैठता है कहीं ना कहीं। मैंने उनका नाम फाइंड आउट करने की कोशिश किया, लेकिन वो नाम मुझे मिला नहीं। नहीं, पर इंद्रजीत जी, जैसा आप बोल रहे हो ना कि हाँ, हाँ, हाईलाइट हाँ, नहीं करते हैं या फिर छुप के हाँ, रहते हाँ, हैं, तो अगर वो हाँ, छुपेंगे नहीं तो वो लोग मार्केट में वो हो जाएगा ना, मतलब एक काइंड ऑफ हाँ, लीक हो जाएगा तो। यस।
जो भी अगर सी मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग होता है बट वो ओपनली नहीं होता है, अदरवाइज नहीं वो होता है, ओपन होता तो हाँ। फिर वो इनसाइडर नहीं होता वो ना। साइड नहीं होता है, बराबर। या सो ये है पॉइंट। ठीक है, सो आपने अपना पॉइंट रख लिया, राइट? यस। ओके, थैंक यू। सो इट वाज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, बट आई वुड लाइक टू एड वन फ्यू थिंग कि जैसा कि अभिषेक ने बताया, राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला, जब उन्होंने टाइटन लिया था, राइट, अगर मैं टाइटन की बात करूँ तो 3 या 4 रुपए में उन्होंने टाइटन लिया था, या अगर उसको अनस्प्लिटेड की बात करें तो 30 या 40 रुपए में लिया था, क्योंकि वो स्प्लिट हो गया। तो बट अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे उनका पोर्टफोलियो, तो वो इन बिटवीन खरीदते भी गए और बेचते भी गए। एम आई राइट, अभिषेक? सो कैन वी से कि ये ट्रेडिंग का ही पार्ट है मेजरली, वी कैन नॉट कंसिडर इट एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? Yeah, that's what I'm saying now. They at some point of time they do active trading to highlight this stuff that build capital build करने के लिए they use the trading skill set, and that's why my point is that yeah, and it's very important that one needs to understand to buy a company with such a huge shares. If the image I've shown you about the Daman Housing Finance, uh, हम्म। you may be disagree with me that he must have not been using any kind of news, but buying 10 lakh shares of a company which is not been liquidated at that time, and exiting at in just 6 days requires lot of research, requires lot of skill set, and that's what one needs to build at over time. So yes, I do agree on that. They do this kind of stuff. Yeah, okay, okay. I hope so there is no question from the audience as well. But Is Nishant, there? one question from that end also. Like, see, these billionaires, okay, Hmm. we cannot expect them to buy the share and just hold it for a long period of time. Okay, because they are not like private equity investors who just invest in the company. So if they think that the stock might fall at a later stage, like the news is negative, there's a negative news for the company. So in that case, they might exit the position. Okay, if you Hmm. see Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala, or anyone, okay, they are holding the stock only because they think it might go up in the future. But Agree, if they right. expect it might fall down going forward, any reason, like say when COVID came, the travel industry went down. Okay, the travel industry was not working, hospitality and travel. So in that case, they will exit the stock, okay, and sit on cash. Okay, so that everyone does. Okay, because they are not like the private equity investors who will just keep the money for a long duration to wait for the company to grow. It's just like an investment, and when you get profit, you'll take the profit, and when you think it might fall, you might exit from the position. Yeah, I do agree with that. But the Mhm. point is that this is a once in a while situation when it Once in happens a to while, yeah. COVID, something like, yeah. But in a normal case, in a generalized way, they do not ट्राई टू डू दिस थिंग्स। लाइक अगर मैं राकेश झुनझुनवाला की ही बात करूँ तो उन्होंने टाइटन अभी भी पूरा एग्जिट नहीं किया है उनके पोर्टफोलियो में से, Mhm. राइट? दे हैव बिन लाइक डन ट्रेडिंग ऑन सॉर्ट ऑफ लेवल, डिफरेंट डिफरेंट लेवल, बट स्टिल दे आर होल्डिंग द, इवन इवन इफ द कोविड हैपेंड, उसके बाद भी उन्होंने पूरा पोजीशन एग्जिट नहीं किया, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। No, but if you see Warren Buffett, he was sitting on a lot of cash recently, right? If you see हम्म 2024, हम्म 2024, because he was thinking the markets might fall down in the future. Okay, so he tried to exit the position. So they do trading, okay, if they think the market might go down in the future. So they just ओके exit the position and later on buy it at a lower rate. That's the thing, what I have to conclude. ओके ओके ओके, फाइन फाइन। सो यू गाइस Yeah, कैन कंटिन्यू and विद दिस सेकंड क्वेश्चन। you can start with second question now. Yeah, यस second यस। question. So Abhishek, you'll be sharing the second I question. can, I will show you. Wait, Abhishek, like it was your first question, right? No, no, no. So we have, settled together with the For and second against. question, and then we'll Okay, going for and against with these questions. okay, okay, okay. Got it, got it. Yeah. So it is the continuation of first question, what we asked, like you should start your journey as a trader and then went to the long term, because this is my belief. So the second question is again is the continuation of this. Is it advisable to trade first to generate cash, then invest for long-term wealth? So I will be, in this, answering this question, I will prove some point to, highlight this. So this is one of the graph. If you have started with 1 lakh rupees, and
let me point it out to you. Yeah, so if somebody has started with the 0 year assuming, and they have started with 1 lakh rupees and assuming that every year you're getting 12% annually return, just like we get in terms of holding Nifty or any kind of SIP we do. So in 15 years we will be sitting with the at this point of value. And if you have in the initial years of yours, basically, just one second. In 3 years, you have come with 50% annual return for 3 years. So this is the 3 year. In 3 years, your annual return was 50% for 3 years, and then you do compounding. So after this 3 year, you're doing 12% every year you're compounding. So at this age, see the difference of you are sitting with. So that's why my point is to highlight that if you start in your initial stage, अगर आप starting से ही एक ह्यूज मनी के साथ लाते हो, फॉर एग्जांपल आपने 50% एनुअल रिटर्न कमाया 3 साल तक, यहाँ 3 साल तक, और उसके बाद आप उस शॉर्ट टर्म में आपने कमा लिया, assuming that you are done this as a trading, आपने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा लिया, उसमें देखिए मेरा पेन चला जा रहा है। हाँ, आपने ट्रेडिंग से पैसा कमा लिया यहाँ तक शॉर्ट टर्म पॉइंट पे, उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म पे डाल दिया, एक स्टॉक लेके या किसी निफ्टी पे डाल दी ETF पे, और आप इतना पैसे पे सिट कर रहे होते। लेकिन आप स्टार्टिंग से सिर्फ इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपने कोई मेजर पैसा नहीं है आपके पास, आप स्टार्टिंग से ही 0 ईयर से ही पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 12% एनुअल रिटर्न मिला। ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी ह्यूज रिटर्न, यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ रिटर्न इवन फॉर द ग्रेटर मार्केट। सो अगर आप उस मार्केट से भी जा रहे हो तो आप इस पैसे से बेटर, सो यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। So the point is to show that it's very important at your initial stage to have a very good amount, and you start then after that you start long-term investing, it will be beneficial for you. Let me erase this all this. So in that, Abhishek, have you done? I'm just continuing. Just give me a second. Okay, okay, okay. Yeah, so that is my viewpoint. I want to show you the mathematical calculation of this. Yes, Nishant, go ahead. Can you go back to the question, please? 1 second. Okay, okay. Next slide. So can you please tell me, अभिषेक, कि ये जो y एक्सिस है पोर्टफोलियो वैल्यू, हम्म, सो आपने ऊपर लिखा है ग्रोथ ऑफ द 1 लाख अंडर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। हम्म। सो 1 लाख पोर्टफोलियो वैल्यू तो मुझे बहुत ऊपर दिख रहा है, लाइक व्हाट आई एम गेटिंग। मैं समझ रहा हूँ सही, या फिर आप मुझे थोड़ा क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली पोर्टफोलियो वैल्यू ये सिर्फ रिटर्न बता रहे हो या फिर पोर्टफोलियो पूरा वैल्यू हो रहा है? पोर्टफोलियो बता रहा है 15 साल में आपके पास कितना पैसा होगा, दैट इज व्हाट द पोर्टफोलियो वैल्यू इट इज शोइंग। नहीं नहीं, सो इट इज इन थाउजेंड्स, मिलियंस, व्हाट इट दैट इज इज एग्जैक्टली? 1.3 CR, assume as a 1.3 CR। ओके। अच्छा, यानी ये जो है वो 0.2 यानी 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। यस। ओके। नहीं, बट ऊपर हेडिंग में 1 लाख लिखा हुआ है अंडर डिफरेंट स्ट्रेटजी। अगर हमने 1 लाख रुपया दोनों स्ट्रेटजी में इनपुट किया तो वो कितना हो जाएगा? दैट इज व्हाट यू आर शोइंग, राइट? यस। एड्रियन, डू यू You हैव have a क्वेश्चन? calculated this? नहीं, आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि 1 लाख, जैसे यू सेड कि 1.2 करोड़ हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? हम्म, 15 साल में, हम्म। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्ट्रेटजी। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्ट्रेटेजी, यस, आपको 3 साल, स्टार्टिंग के 3 साल में 50% एनुअल रिटर्न मिला है, इधर भी 50%, इधर भी 50%, इधर भी 50%। उसके बाद आपने शॉर्ट टर्म किया ये सारा ट्रेडिंग, इस लाइन के बाद आपने लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट हो गया, अब आप बाकी पिछली वाली स्ट्रेटेजी की तरह 12% कमा रहे हो। दैट इज व्हाट द स्ट्रेटेजी इज, लॉन्ग टर्म, ओके, ओके, ओके। शॉर्ट। और पिछली वाली स्ट्रेटेजी है कि आपने स्टार्टिंग से ही अपने पैसे को नॉर्मल लॉन्ग टर्म रखा है, बाय कर लिया और होल्ड करके छोड़ दिया है। एट दैट टाइम आप 15 साल में अभी भी 0.5 लाख पे बैठे होते, मतलब लाइक 50 लाख पे।
नहीं, बस मेरा यही क्वेश्चन है कि 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया और फर्स्ट 3 ईयर हमको 50-50% रिटर्न मिला, राइट? हम्म तो अगर 1.5 लाख पहले साल में 1.5 लाख हो गया, राइट? हम्म 1 लाख का 50%, तो यहाँ हम्म 0.4 लिखा हुआ है, विच इज शोइंग 0.4, मतलब व्हाट डज इट मीन? 1 लाख स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर में, वो अमाउंट कुछ बना, सेकंड ईयर में कुछ अमाउंट बना, थर्ड ईयर में कुछ अमाउंट बना, तो ये जो अमाउंट बना वो समवेयर अराउंड 0.38 समथिंग बना होगा। नहीं, मतलब ये लैख में है, या दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि ये क्या है? दिस इज इन lakh वैल्यू ना, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद ग्रोथ ऑफ 1 lakh अंडर डिफरेंट स्ट्रेटजी। नहीं, वो अब 0.2 यानी 20 लाख है, 0.4 यानी 40 लाख है। like I have some maybe it is possible that I am not getting the point what you are trying to say, See, or Nishan, I feel that let me हाँ. reconsider it. The point is not to show कि ये calculation क्या है. The point is to show that if you start at your initial age and आपने starting के 3 साल में एक बड़ा return कमाया है and then you switch to long term investment, your difference of this difference and the difference you started with long term investment will be very huge. That's my point to show. The point is not to go into calculation. So even if somebody wants to go to calculation, आप 1 लाख को चालू करिए और 3 साल तक 50-50 रिटर्न कमाइए, उसके बाद 12-12% से 15 साल तक कर दीजिए, या एक लाख को 12-12% तक कंपाउंड एनुअली कर दीजिए, यू विल गेट द डिफरेंस, द डिफरेंस विल बी वेरी ह्यूज. सो द आइडिया इज टू शो दिस पॉइंट, ओनली दिस पॉइंट, दीज टू डिफरेंसेस. दैट्स व्हाई आई वांट टू शो दिस, नॉट टू वरी अबाउट कि यहाँ से क्या हुआ है. द आइडिया यहाँ पर सिंपल है कि मैंने 3 साल तक बहुत अच्छा रिटर्न कमाया, दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग एज एक्टिव रिटर्न, मैंने ट्रेडिंग की जिस भी तरीके से कमाया. देन आई शिफ्टेड टू लॉन्ग टर्म जस्ट लाइक दिस राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने 5 से पहले 25 लाख कमाया एंड देन 25 लाख से उन्होंने धीरे धीरे करके अपने स्टॉक्स, अच्छे अच्छे स्टॉक्स लिए एंड देन दे शिफ्ट टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबा होल्ड किया. यहाँ पर और नीचे वाले में सिर्फ एक है कि सिर्फ स्टॉक ले लिया है, उसको कुछ नहीं किया, बस होल्ड करके ही रखा छोड़ा. So the idea is to show these difference, not to the value exact. आप वो कोई भी एग्जांपल ले लो, 10 लाख से स्टार्ट कर दो, उसका 50% इंक्रीज कर दो, दैट्स द सेम वैल्यू. So अच्छा, you are saying that initially they have started with the trading, later on they have converted into the investing. That's what you are saying, right? Yes. Okay, got it. ठीक है. Yes, Adrian, Any Okay. you can continue. So one question to Abhishek. In this case, you have assumed that they're making 50% returns per year, okay, from trading, right, for the first 3 years yes. in the second part. But 50% is a huge amount. Okay, means even the best traders, okay, they do 50%. I'm not saying no. Okay, Mhm, around 60% per annum is, if you say Jim Simons have done around 60% per annum, right? mhm. But 50% for a normal individual is too high. So I'm not talking about now they will be doing 50% for their whole entire life. I'm just talking for 50% for just 2-3 years, build some capital, and they just shift it to. That's like Rakesh and Zola. Even I believe that 50% for your entire life, if somebody will be going at this pace, you could have, beat even Elon Musk. I totally agree. So it I is do agree with it that. is it is totally impossible to somebody get this kind of return for his entire life. यस, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सबने हमने देखा है कि राकेश झुंझुनवाला ने कैसे वो टाइटन को 15 रुपए में बेच के 65 बेचा, वो 5 को एकदम से 25 लाख किया, वो दिस काइंड ऑफ स्लिपेज वी टॉक अबाउट दिस. बट इवन राकेश झुंझुनवाला को भी बोलो कि बार बार 15 से 100 करके दिखा दो, ही मे बी आउट ऑफ 100 टाइम्स ही विल फेल्ड एट 98 और 95 टाइम्स, ही विल बी एबल टू डू इट फॉर 2-3 टाइम्स. दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग टू हैव इट. सो यस, नो डाउट इन दिस. Yeah, but only one thing. Actually, this chart is a good chart. The only thing is the 50% for the first 3 years seems unrealistic. Okay. So let me just show. I've just created a similar thing. Okay, on a similar lines. So I can just unshare. Okay. So what I have created over here is I've taken a trader and investor. Okay. And I've taken an average CAGR of 12% for Nifty for the last 10 years. Okay. So I've shown this from 2014 to 24. Recording, Now, if you see, recording. okay. So if you see over here, if a trader, okay, the initial capital is 1 lakh for both of them. Okay. And if I'll just get Nifty 50, okay, so just Nifty 50 like 12.4%. This is the average I've taken, the CHER, you can see over here. And for a trader, 18%.
So if you see over a 10-year period, you can see the difference. Okay. Now this is continuously investing from 2014 to 24. Okay, at the average of 12.4, and this is continuously trading from 2014 to 24. Okay, so if a trader is continuously trading with 1 lakh capital and gaining around 18%. Okay, now why I've taken 18%? I think it is high, but it is reasonable for a trader. Okay, otherwise it was better to invest if he just wants 12%. Okay, but 18% is okay, fine. Okay, I've just taken 18% because above that might be unrealistic and below that might be better to invest in the stock market or any other modes of investing. So if you see the difference, here it is 3 lakh 22,000, here it is 5 lakh 21,000. Okay, it's nearly 2 lakhs difference. So this is the thing if you invest it. Okay. And if I say one more thing, but if you say for a trader, okay, these are the factors which affect a trader. It's not realistic most of the time. So I cannot say every year you'll get 18% CAGR. Okay, most of means for many of the years you might lose your capital. Not lose your capital, you might get negative returns. Okay, or you might get lower returns than the investor. So these are the things, okay, wherein if you see much of the things are in the favor of investor because he keeps it for a long term. He just invests in the stock market and keeps it for a longer duration. Okay. The returns are low, okay, but many of the things are in favor of him. So there's emotional control. Okay, so time required also is very low. So he has to not keep on looking at the screen. Okay, and if you see for a trader, he needs to keep on looking at the screen if he wants to trade on a daily basis. So the investor can use the same time for some other important task. Okay. And skills minimal. Only one time, just see how the stock is going to perform in the future. Okay, and you can just invest in the stock. Okay, and since a 10-year duration means you can expect a good return. Okay. This needs to be very high. The skill needs to be high in trading. You need to analyze multiple charts, okay, or indicators and see how much means if the market can go up or down. Okay, and there's a roller coaster ride. Some days you might make a profit, some days you might make a loss. Okay, so you cannot say what is the thing. And as I said, the last one, okay, it's not realistic for more people. What I have mentioned, 18%. Okay, 18% year on year is unrealistic. Okay, but for an investor, since this is the actual data, okay, we know the CAGR for the last 10 years is nearly 12%. After the last 10 years of 50-50, okay, it's nearly around 12%. Okay, so I think for an investor, these other factors, okay, the returns might be low. Okay, I'm not arguing with that thing. The returns will might be low compared to a trader, but the other factors that are there, okay, that also adds to the you can say the stress nature or the health of the investor that adds to that thing, which you can see in this slide. Okay, so that was my thing. Okay. Edit, I do have Mhm. counter for this. It's a counter thing, yeah, tell me. So again, this things I have never seen a person, or even a hedge fund analyst, getting 80% return every year. So 18, there not is 18. no 1.8%. So every year, so it is kind of impossible. I have seen a lot of companies, getting extraordinary returns for some years, at least for 1 to 3 years, but not on a regular basis. So this comparison feels like a little assumption basis that you will be getting 18%. So my point is not to highlight ki this percentage, because at any point of time मैं बोलूंगा कि 50% आ जाता है. We can take example कि जेन स्ट्रीट ने करके दिखाया है. We can take example कि सेबेस्टियन कैपिटल ने करके दिखाया जापान में 2-3 साल तक. बट क्या उनसे बोलो कि लगातार कर पाएंगे? नहीं. जेन स्ट्रीट क्या लगातार कर पाई? नहीं, वो पकड़े गए. So my point is that कि argue should not be in case कि कौन कितना कमा पाता है. My simple point is to highlight that if you are able to do for 2-3 years and then you switch to long-term investment. So see, it's very neat to understand that this audience may not, understand in a very wrong manner that I am basically want you to shift to traders. I basically don't
personally like doing trading. So I basically love, doing a long-term investment. So my idea believes, and that's why I'm answering in this way, that if अगर मेरे पास आज 5 करोड़ होते तो मैं इन्वेस्टिंग करता, बट सिंस मेरे पास 5 करोड़ नहीं है तो मुझे कुछ टेक्निक ढूंढनी है. सो बिकॉज अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं एक द्वारा इसमें यहाँ पर समरी करना चाहता हूँ. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन कि जिसको यार 5 करोड़ कमा के रोटी कपड़े मकान करके मस्त जी लूंगा. वी आर टॉकिंग अबाउट टू बिकम अ राकेश झुंझुनवाला. अगर कुछ बनना है, एंड इफ यू वांट टू बिकम पर्सन लाइक दैट, आपको यू हैव टू फाइंड अ वे, बिल्ड 5 करोड़ कैपिटल एंड देन यू स्विच टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और फिर देखो सी कंपाउंडिंग का मजा कैसे आता है. बट अगेन, सो दैट्स व्हाई माय समरी इज की the problem should not be in terms of return. The problem is to you to find that how you're able to do this kind of return for initial years, and then switch to the long term investment. Yeah. Yes, I do agree with that thing, Abhishek. Because yeah, so you should find out how you can initially gain something, okay, gain some amount, okay, and where later on you can move towards investing. So that should be the approach. Yeah. So if you allow me to, subsequently ask the third Sure. question, because it's somewhere very similar to this, and Mhm. a lot of people will, after discussing the third question, they can continuously ask the second and third question in terms of perspective. So it's very continuation of this. So this question says that is long-term investing realistic for someone starting with very little capital or not trading a business income? So now we're discussing about कि अगर मैं हूँ और मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है, क्या मैं अपने 50,000 से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ? क्या मैं 50,000 से राकेश झुंझुनवाला बन सकता हूँ? सो अगेन, दिस क्वेश्चन इज नो वे टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग. मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है. ऑल आई हैव इज 50,000 और इवन 1 लाख रुपीज, बिकॉज सिंस द डिबेट वाज टू कैन आई कन्वर्ट 1 लाख टू One वन lakh. करोड़ रुपीज सो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, ना मुझे आती है, ना मेरे पास स्किल सेट है, ना मेरे पास टाइम है, ना मुझे जॉब करनी है, ना मुझे कोई बिजनेस इनकम है, ना मेरे फादर बहुत अमीर हैं. सो मेरे पास जो भी करना है खुद से करना है. सो मैं कर पाते हैं कि नहीं? लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो टेक अ वेरी विल टेक अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो. सो फर्स्ट सिनेरियो है जो सबको पता है, एक वन टाइम लमसम डाल दिया मैंने, 1 लाख रुपए डाल दिया. एज यू सो 12% एनुअल रिटर्न है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, निफ्टी इज गिविंग दिस. 40 सालों में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा. गुड. मैं 40 सालों में 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा. चलो ठीक है, फाइन. Because considering that nobody knows ki who's going to live 40 years, but still we believe that. Let's start with the second scenario. मैं सिप करता हूँ, बिकॉज आजकल कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, सिप कर दीजिए तो सब कुछ सही हो जाएगा. अगर मैं 5,000 रुपये पर मंथ भी लाता हूँ, कहीं से मैं कुछ भी कर देता हूँ, एंड 5,000 रुपये पर मंथ लाना चालू करता हूँ, मैं 12% सीजीआर से करता हूँ, तो भी मुझे 26 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने के लिए. लेट देख तुम यार, 5,000 तो बहुत छोटा है, मैं 10,000 करना चाहता हूँ, तो भी 20 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए. And we are discussing about the people who has a wealth of somewhere around 11-12,000 crore. So we are nowhere even 0.1% of this, closer to these people, if we go by this method. Now I will going to define unrealistic term. So this is beyond mathematical possibility. So somebody will come to and tell me, यार ये तो मैथ ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता. So bear with me. मैं एक देखो, मैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि जब आप इन्वेस्टिंग करते हो, इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद सच अ स्मॉल अमाउंट, आपने 1 लाख रुपए कमाया, 5 साल के बाद आपका 1 लाख रुपया सिर्फ 1.7 लाख रुपीज होगा. इतना जब स्लो पैसा ग्रो करता है तो आप एक डिल्यूशन माइंड में चले जाते हो और आपको लगता है यार क्या ये स्ट्रेटजी सही भी है कि नहीं है, यार मेरे को कुछ चेंज करना चाहिए, मैं ये इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ यार, मैं ये डाउ जोन्स 14% रिटर्न दे रहा है, निफ्टी तो ये 11% पे फंस गया यार, ये मजा नहीं आ रहा है, आई शुड शिफ्ट टू दिस डाउ जोन्स. और इवन आई शुड गोल्ड तो 26% रिटर्न दे दिया यार, मैं तो क्या निफ्टी में बैठ गया. तुम शिफ्ट कर दोगे, एंड सडनली व्हेन यू शिफ्ट गोल्ड, गोल्ड ने गोल्ड आपको रिटर्न कम देगा और निफ्टी आपको 14% 15% दे देगी. अगेन बिकॉज वी स्टक इन दी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, बिकॉज यू आर नॉट बेसिकली सीइंग योर मनी ग्रो. आपने 5 सालों में सिर्फ 1 लाख को 1,76,000 होते ही देखा है. सो देर इज नो डाउट आपके माइंड में एक प्रेशर आएगा. आपके पास लाइव इवेंट्स में बहुत सारे वनरेबिलिटीज आती है. लाइक एग्जांपल एक बहुत सिंपल लेते हैं, कि ऐसा तो है नहीं कि आप ये जो पैसा डाल रहे हो कि आपको कल को नीड पड़ी तो पीपल जनरली आपको, यू हैव टू डू मैरिज. बिकॉज आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेरी रियलिस्टिक टर्म. मैं अपने बारे में बात करूँ, किसी और का, आपको शादी करनी है,
आप बीच में आपको जॉबलेस हो जाता है, इकोनॉमिक ड्रॉडाउन आ जाता है, आपको मेडिकल नीड पड़ जाती है, आपको लगे यार अरे मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है मैं निकाल लेता हूँ, मेरे को मैं लोन लोन कौन लेगा, मैंने जो पैसा डाला सिप में मेरा हो गया है अब। आज से 15 साल बाद आपको कोई नीड पड़ती है इमरजेंसी की, मेरा पैसा हो गया 15 लाख, ये अब आपने निकाल लिया, तो यू आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि आप 1 करोड़ तक पहुंचोगे भी, देयर मे बी चांसेस कि आपको लैडर में बीच में कोई काट दे, आपकी लाइफ इवेंट कुछ काट दे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चलो आपने सारी प्रॉब्लम दूर कर लिया, आप सांप सीढ़ी का खेल खेल के आपने सारी सारी, आपने साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट भी जीत लिया, आपने लाइफ इवेंट्स भी जीत लिया, आपने सारे इवेंट्स कॉन्कर कर लिया, आपको लगता है अब तो मैं 1 करोड़ रुपए होगा। बाय द टाइम यू हैव 1 करोड़ रुपीज, ट्रस्ट मी गाइस, दैट 1 करोड़ रुपीज वैल्यू विल बी जस्ट 14.2 लाख रुपीज, बिकॉज लेट मी टेल यू इंडिया की इन्फ्लेशन 6% है। तो आपने 1 करोड़ रुपए कमाया भी 40 साल बाद, लिटरली आपने वो उस टाइम पे उसकी वैल्यू सिर्फ 14 लाख रुपए होगी। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। 14 लाख रुपीज यू कुड हैव अगर आप एक जॉब कर लेते 40 साल तक आप कुछ और अच्छा कर लेते। तो मैं तो अगर आप बोलूंगा, वेरी बैड टर्म आई एम गोइंग टू से दिस, अगर आपको 1 लाख से ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करनी तो मत ही करिए, क्योंकि कुछ होने नहीं वाला। 40 साल बाद आप रोगे कि मेरे पास 14 लाख रुपए, इससे अच्छा आप जॉब करते तो आप ज्यादा कमा लेते। So this is a very harsh word I'm saying it, but that's what my viewpoint is. Not to do trading with 1 lakh, investing with 1 lakh rupees. By the end of 40 years, you're going to have nothing in your hand. So with all this constraint, अगर आपको फिर भी स्मॉल कैपिटल से पैसा ग्रो करना है, तो मैं इस पॉइंट को कंप्लीट करना चाहता हूँ, आपको अब टाइम को लिवरेज करना पड़ेगा। यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ टाइम कैसे स्पेंड करना है। हम एज अ यंगस्टर्स हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे जैसे की आपको बिताना पड़ेगा 15-20 साल मार्केट में, आपको बैठना पड़ेगा सिस्टम में, कुछ नहीं करना। समटाइम्स नॉट टू डू समथिंग इन द मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दैट्स ऑल माई आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इफ यू वांट टू डू investing with this money, it's very difficult. It and up तो to you. तो फिर अभिषेक जैसे 40 साल बाद ये 1 करोड़ 14 लाख रुपए हो जाएंगे, है ना? नो नो, तो 1 करोड़ 14 लाख नहीं होगा, एक वो करोड़ उसकी उसकी वैल्यूएशन वैल्यू उससे होगी। हो जाएगा, हाँ। हाँ। तो फिर उससे तो अच्छा है खाओ पियो ऐश करो। यस, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ ना, करो मत। अगर 1 लाख से इन्वेस्टिंग करनी है तो करो ही मत, इससे अच्छा जॉब कर हाँ, लो कि खाओ पियो ऐश करो। अच्छा इसमें भी एक ऐसा बोल सकते हो अपन कि अगर 1 लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट किया और उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन हम्म उसको मंथली खर्चे तो निकालने पड़ेंगे ना। हम्म तो मंथली खर्चे अगर उसका 5,000 भी नहीं निकलेगा, तो फिर हम्म। वो ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, वो इन्वेस्टिंग करे ही नहीं ना, फिर तो क्यों ही करेगा, हाँ क्योंकि हाँ, उसको पता है 40 साल बाद क्योंकि उसने कुछ नहीं उखाड़ना है। नहीं नहीं, जैसे 1 लाख रुपए आज है और मेरे हम्म पास जॉब नहीं है, हम्म लेकिन मुझे तो मेरी फैमिली चलानी पड़ेगी। हम्म यदि मैंने 100% भी रिटर्न कमा दिया, हम्म। वो सारा 100% मेरे फैमिली में चला जाएगा। हाँ। तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। एंड ये सब कुछ कंडीशन है, यदि आपके पास पैसा है लेकिन खाने पीने के लिए सब सुविधा अवेलेबल है, सारी चीजें, तब जाके कुछ कर सकता आदमी। नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पास हाँ सब कुछ चल रहा है ठीक है, बट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का मत करिए, हाँ बिकॉज रिजल्ट तो ऐसा दिखा रहा है कि कोई हाँ फायदा नहीं है, हाँ। बैठ के कुछ फायदा नहीं है लंबा। और मार्केट में लोग 1 लाख रुपए लेके आते हैं, वो यही हम्म सोचते हैं कि अभी मैं 1 लाख रुपए लेके आया, ये महीने में 5-6 हज़ार रुपये कमा लेता या 4-5 हज़ार रुपये कमा लेता, फिर वो 4-5 हज़ार के मैं कुछ 2-4 शेयर खरीद लेता मैं, और ऐसा हम्म। बढ़ाते बढ़ाते जाके साल भर कर लेता। लेकिन वो 1 लाख के ऊपर प्लस कभी जाता ही नहीं, वो माइनस में ही चला राइट। जाता है ना? यस। हाँ या एड्रियन। Yes, yeah, Abhishek. So while I agree, what you're saying is right, because after 40 years, this is you've taken a 40-year period, okay, and the inflation, what you have said is around 6 to 7%, right? Correct, right? Years, 6 to 7%. Based on that, basic power is around 14 lakhs as of today's date, correct? So, s- so so what Abhishek said, okay, that is actually absolutely right. But now suppose you have 1 lakh in your account, okay, as Abhishek said. So what is the other thing you can do, okay, from that 1 lakh? Now, when I'm talking in terms, unrealistic terms, so it is not like this. So I've just created a table. Okay.
So if you see this thing, okay, based on okay, now I have 1 lakh in my account, okay, which I would like to just invest. Means what can I do with this amount, okay, for investment purpose? So I've done a thing like, this is not an advice, okay, it's just how I can use it effectively. So I can do trading plus investment. Okay, if you see this chart. So I've just taken 1 lakh rupees, okay, as a starting capital. And similar thing, I've just taken, based on my previous example, 18%. Okay. While that is unrealistic, but 18%, okay, can be achieved. And I think so. Okay, it can be achieved. Okay, but just 18% CAGR, okay, in trading. And investment value is 12%, 12.4, which is actually for the last 10 years, from 2014 to 24, the average I'm saying, okay, is 12.4%. So you can see like starting capital of 1 lakh rupees, okay, and the combined net worth, what you can see over here, 1 lakh 18. Okay? And so if you keep on doing that for a next till the end of 2024, okay, you can see how much amount you have in your account, okay, which is 5 lakh 32,000. So if you see the previous chart which I showed, it was around 5 lakh 21,000 for trading. Okay, and here you can see is around 5 lakh 32,000. So you can see there's a small difference, but the only thing is, okay, you're not investing the entire amount. So whatever profit you're getting, okay, you're just investing the 50% of that amount. Okay. So this capital is at least secured. Consider this the second last column. Okay, this capital is at least secured. So as we said, that is not realistic to have 18% every year. Okay, some years you might lose. Okay, you might have negative returns. Some years you might have positive returns. Okay? So, but one thing is that you can invest whatever profit you get. Okay, that 50% you can invest. Okay, and the remaining amount you can see 18,000 was the profit. Okay, 9,000 was invested, and 1,09,000 again I started. Okay, with my trading for the next year. Okay, so this is 1 year. The same thing, I'll invest 50% of that in Nifty 50. Okay, which is around 12.4%. Okay, so you can see over here. So it comes to around 5 lakh 32,000. Okay, so what I think one way we can do it in this way, okay, because anyways, okay, as Abhishek said, okay, just investing, just trading, okay, and even if just investing in SIP for 40 years won't make sense. Okay, your 1 crore will just be costing around 14 lakhs. So I think in 10 years, okay, this much, which is around 5x your initial capital. Okay, so you can say 500%. So this will be a better way, okay, instead of just trading, okay, which is highly risky, or just investing, which will give you lower returns. Yeah, Abhishek. I guess I win the debate. Now my competitor believes that it is important to do active and passive trading. So I guess I'm going into right direction. Thanks, Adrian, for at least agreeing point. So let's anyone has question to this? अच्छा, मार्केट में 1 लाख से 1 करोड़ बनाने वाले कितने होंगे, एक अंदाज? Inderjit, iska, you know, it's very difficult to get this kind of data because a lot of people don't publish it and even SEBI don't publish it. SEBI बताता है कि कितना loss हुआ है, but there is no, or even if you find somebody किसने किया भी है तो उसकी authenticity इतना granted नहीं होती है, तो it's kind of very difficult to find this. But yeah, we have some very profound in Japan का trader था, उसने करके दिखाया था. You know, you can talk about. मोटोगाशी. Yes. So there's few people like this, but especially आज की age में, if to find these kind of people, it's kind of very difficult because I don't know. In my knowledge, I don't see anybody claiming that उसने 1 लाख से 1 करोड़ रुपए करके दिया है. तो जैसे अभी यूट्यूब में जैसे बोलते हैं कि मैंने इतना इतना कमा लिया, इतना इतना हो गया, ठीक है, तो यानी अपन ये समझ सकते हैं कि 1 करोड़ ट्रेडर में से 100 लोग होंगे जो 1 से 1 करोड़ जाते होंगे. इंद्रजीत, I would say एक अंदाज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ इतना ही जाते हैं, एक अंदाज पकड़ता हूँ मैं. 10 ले लेते हैं. 10, 10 1 ले करोड़ में लेते से हैं. 10, 1 करोड़ ट्रेडर में से 10 आदमी ले लेते. फिर बाकी जो लोग हैं
उन 10 लोगों के पीछे ट्रेडिंग करने जाते हैं और बाकी का सारा पैसा लेके चले जाते हैं, जो जो 10 लोग हैं। हम्म तो क्या ये जो यूट्यूब पे जैसे जैसे अपन ने भी आज का सेशन रखा है कि 1 लाख से 1 करोड़, तो क्या ऐसे सेशन यूट्यूब में चलना चाहिए कि 1 लाख से 1 करोड़ महीने कमाए? हम्म तो एक बार इंद्रजीत द्वारा क्वेश्चन पूछा, लास्ट में क्या पूछा? जैसे अभी हमारा सेशन चल रहा है कि 1 लाख से 1 करोड़, बराबर है। हम्म हम्म लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा जा सकते हैं, हम्म ऐसे कोई स्ट्रैटेजी है नहीं है, ठीक है। हम्म लेकिन यूट्यूब पे ये बताया जाता है कि 1 लाख से 1 करोड़ या फिर दस हम्म लाख से 10 करोड़, है ना, बहुत बार, यस। बराबर है। तो ये यूट्यूब पे चलाना एक सही है या फिर गलत है, या फिर ये अपन ये बोल सकते हैं आई कि मीन मैंने। टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। हाँ। और दूसरा ये है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको देख लो क्या उसने ये किया भी है कि नहीं। बिकॉज हम्म, लॉट ऑफ पीपल फॉल इनटू दिस। आई हैव नेवर सीन अ गाय जिसने 1 लाख से 1 करोड़ किया हो। अगर कर भी दिया हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सस्टेन कर पाया उस मनी को। दैट्स अगेन अ क्वेश्चन। ओके। यानी ट्रेडर से अच्छा इन्वेस्टर बनना ही ठीक है। नहीं, बट फिर 1 लाख से फायदा क्या होगा ना हाँ इंद्रजीत? हाँ। अभी तो मैंने बोला क्या, हम्म 40 साल बाद क्या ही कमा लोगे। हम्म, सो आते हैं इस पे भी आते हैं, क्या करना है। सो ओके। एड्रियन, allow me to Anyone speak from this. the audience? Yeah, I think anyone from the audience has anything before we move ahead. Hmm. Nishan? Yes, yes. I'm still waiting for the others to participate. Is there any So, outsider? Do we have an outsider from the audience? I guess Govind Prajapati. Yes, yes. Govind, yes. Do you have any doubt, question, your perspective, your feedback regarding No, what we are sir. discussing? No, sir. No. Okay, okay, okay. So, are you understand like what we are discussing right now? What is the topic? Yes, sir. Yes. I got it. Okay, okay, okay. Thank you. Yes, you guys continue. Okay. ठीक। तो अब फाइनली क्वेश्चन को ले ही लेते हैं, बिकॉज बहुत लंबा सस्पेंस रखना भी अच्छा नहीं रहता है। नहीं, देन आई विल सी कि ऑडियंस बोल रहे कब से बोल रहे हैं, बता दो। सो फाइन। जैसे जो क्वेश्चन पूछा इंद्रजीत ने, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कोई आप एक बंदा बता सकते हो जो बिलियनर बना हो सिर्फ इन्वेस्टिंग करके। उसने बस सिर्फ चलाई हो, इंडेक्स इन्वेस्टिंग की हो, और ना कोई ट्रेडिंग की हो, ना कोई अपने कंसंट्रेटेड। आई वांट टू एक्सप्लेन यू, कंसंट्रेटेड बेट्स वो बेट्स होती है जिसमें यू आर इनटू वेरी हाई कॉन्फिडेंस दैट दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन। So one of the example of concentrated bet that at your level that you assume that कि SBI का merger होने वाला है with the huge banks. So you do a concentrated bet knowing that कि अगर ये merger होगा तो you will get gains from that because of your extra knowledge and because of your extra people around you. You are able to get these kind of news at a very early stage. So we call this as a concentrated bet because there is a very slight line difference between insider trading and concentrated bet. So somebody giving you insight from SBI telling you that SBI का merger हो रहा है, that is illegal. But with of your knowledge, you're able to catch it from, because I have seen lot of people who are able to catch this merger because of reading their balance sheets from SBI and other their this State Bank of Patiala, State Bank of all the six state banks who got merged with this State Bank of India. So yeah, so a very thin line of I just wanted to highlight. So हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई एक ऐसा बिलियनर है जिसने सिर्फ और इन्वेस्टिंग से ये करके दिखाया है। तो मेरा बहुत आंसर बहुत सिंपल लाइन पे है, नो। आई एम देर इज नो पर्सन, आई एम इंडियन बिलियनर जिसने ऐसा करके दिखाया है, जिसने सिर्फ पैसे इन्वेस्टमेंट की है और कोई एक्टिव ट्रेडिंग नहीं की है, कोई कंसंट्रेटेड बेट नहीं की, कोई 5,000 को पहले अपना ह्यूज मनी नहीं बनाया, देन ही कम बिकम ए बिलियनर। देर इज नो बडी लाइक दिस। सो नाउ द आंसर came how you will do that. So it is very important, the right tool for the right goal. So now what is your goal? अब मैं इस पूरे डिबेट को एक स्लाइटली डिफरेंट पार्ट में ले जाना चाहता हूँ, सो जस्ट बेयर विद मी। सो ये क्वेश्चन हमारा था कि हम 1 लाख को 1 करोड़ कर पाते हैं, और ये क्या ये ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग या है। सो अब आपका गोल बहुत मैटर करता है। सो जस्ट इमेजिन मेरा गोल बनना है बिलियनियर।
So I can't just sit on कि यार मुझे पैसिव इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है और मुझे बस ऐसे करना है। आई कांट एबल टू अचीव इट बिकॉज देर इज नो पर्सन हु इज एबल टू अचीव लाइक दिस, पैसिव इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ चला के। अगर मेरा गोल करोड़पति बनने का है, कि मुझे यार 1-2 करोड़ कमाना है, यू नो, मुझे करोड़पति बनना है, 1 करोड़ का मुझे एक माइंड में स्टेगा कि यार 1 करोड़ कमा लो तो बहुत होता है। सो मेरा पाथ कुछ अलग होगा, मेरा टूल्स अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूँ, मेरी लाख रुपए सैलरी, मैं महीने का 10-10 हज़ार रुपये का सिप चला दूंगा। या मुझे लगता है 26 साल बहुत ज्यादा है, मैं 20 हज़ार की सिप चला दूंगा, मैं 80 हज़ार पे अपना गुजारा कर लूंगा। 20,000 में सिप चला के अपना एक पैसिव इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक वे से अपने शेयर्स को होल्ड किया करूंगा, सिप चलाया करूंगा, और मैं 10-15 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। सो now the direction is that what is your goal, what you wanted to become, that's totally depend upon your, if you want to become billionaire, your strategy cannot be passive investment, because we have, later हमने पिछले क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड किया, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो 1 लाख से, or even if you do with 10 lakh rupees, you're not able to achieve, you're not able to become billionaire by this method, because long run में आपको बस टाइम होल्ड करना और आपका पैसा कुछ बड़ा होगा नहीं, इन्फ्लेशन से आप पैसा लूज कर दोगे। बट अगर आपका गोल सिर्फ करोड़पति बनने का है, कि मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ, मुझे सिर्फ करोड़पति बनना है, 1-2 करोड़ कमाना है, 3-4 करोड़ कमाना है, तो देन यू कैन इजिली डू पैसिव इन्वेस्टमेंट। आप आराम से 20-20-30 हज़ार रुपए का अपना मंथली पैसा डाल के आप एट द टाइम ऑफ यू गेट रिटायर्ड 30-40 ईयर्स, आपके पास 12-13 करोड़ हो जाएगा। So that is my answer to this question. There is nobody who is able to do this with the passive investment. But अगर आपका गोल डिफरेंट है, you can achieve it. You can become a करोड़पति। वो कौन बनेगा करोड़पति? You can become like that, but not a billionaire. So yeah, Adrian, over to you. Just Yes. So you can just share the slide, Abhishek. yeah. There you go. Right. So even I actually, okay, I agree to this thing. Okay, so there's not one single person, okay, where I've researched, okay, who has become a billionaire just by passive investment. Okay, they have to be an active investor. Okay, either all of them, which I have seen, they at least started trading for the initial years, and then later on they started investing. Okay, if I say there are certain people like, uh, I'll just share my screen once. Yeah. Second. Okay. So if you see like all these investors, okay, so from Radhakishan Damani, okay, to Rakesh Jhunjhunwala, okay, this, okay, all of them. Ramdev Agarwal is from Motilal Oswal. So if you see all of them, initially they started trading and then they went to investing. Okay, all of them. So it is necessary, okay, that you initially do something, okay, some trading, okay, and then you move towards investing. Okay, just being a passive investor won't make sense. Okay, and you cannot be a billionaire in that case. Okay, so like Adrian, you have completed your words? Yes. What sentence? Yeah. So according to Abhishek, what I have understand that if we want to be a wealthiest person in case of stock market, so we should have a in initial days we should have a like as a trader. That is what you are saying, right? Because if you follow the passive investing, so we cannot be the billionaire in that case. That is what the conclusion from your side. Can I say? Yes. गोल बिलियनर बनने का तो नहीं है, अगर करोड़पति बनने का तो कर सकते हो। Acha, acha. So, guys, in the crowd, I am just trying to summarize the point what Abhishek have concluded with. अभिषेक का बोलना है कि अगर हम लोग को अगर पैसा बनाने की बात आती है, सो डायरेक्टली एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके बड़ा अमाउंट तक जाना बहुत मुश्किल है या फिर ना के बराबर है। दैट इज व्हाट यू आर राइट सेइंग, राइट है ना? 1 लाख से इट्स काइंड ऑफ 1 करोड़ इम्पॉसिबल। 50 करोड़, हाँ, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। बट उनका कहना है कि अगर ट्रेडर है, सो अगर वो ट्रेडिंग एज अ जर्नी स्टार्ट करता है, ट्रेडर एज स्टार्ट करता है, तो समहाउ ही और शी कैन बी द इन दैट दैट काइंड ऑफ लिस्ट, राइट? सो दिस वाज द Right. समरी गाइस। सो अब आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला, राइट गाइस, कि हु इज द वेल्दिएस्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर? यू गाइस आर वेलकम टू से एनीथिंग।
what to? इंद्रजीत आपको कुछ कहना है? जी जैसे एड्रिन ने एंडिंग के स्लाइड में 2 नाम दिए थे, एक रामदेव जी अग्रवाल और एक मोतीलाल ओसवाल, हाँ मोतीलाल ओसवाल, और दूसरा एक नाम थे कौन? मुकुल अग्रवाल मुकुल और अग्रवाल। रामदेव अग्रवाल। मुकुल और नहीं वो तो ये मोतीलाल ओसवाल हो गया। ओके ठीक है। हम्म, उसके पहले एक नाम दिया था आपने, एक राधाकृष्ण दमानी, वो राधा जो कृष्ण। अभिषेक ने बताया था, वही है डीमार्ट फाउंडर। हाँ ठीक है। हाँ तो जैसे आपने बोला कि वो इन्वेस्टर है, बराबर। इन्वेस्टिंग करके पहले उन्होंने ट्रेडिंग किया, जो भी करना है, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट किया। ओके करेक्ट, लेकिन हाँ 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 लेकिन वो इन्वेस्टर कम बिजनेसमैन ज्यादा हो गए, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है और खुद के बिजनेस में उनका इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली। तो सो क्या हमें खुद ऐसा बिजनेस खोल के हमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सो इट्स डन राइट इंद्रजीत। हाँ So अगर तो if you look at these people, okay, all of them, हम्म, okay, if you say Rakesh Jhunjhunwala, Radhakishan Damani, then Ramdev Agarwal and Kul Agarwal, okay, or any other billionaire, their initial years were into trading, okay, wherein they made a good amount of money through trading. Okay. Now to manage that money, they started investing. Okay. So if you say Radhakrishna Damani, okay, he invested into DMart. Okay, the initial capital he invested into DMart. Okay, and I've mentioned that also in the slide. If it was, yeah. Okay, so I mentioned that also. He invested an amount into DMart, and then using that amount, he grew DMart. Okay, so he became a businessman later. Okay, but the initial capital which came, it came from trading. Okay, I'll also show you one more thing. Like, say, if you want to understand, right? In look, if you want to understand their lives. Okay, तो एक वेबसाइट है जहां से मैंने ये सब इंफॉर्मेशन निकाला था. Yeah, I'll just share that. Okay, so यहाँ पे if you see this website, okay, trendline.com, और यहाँ पे you can see superstars. So you can see here they are superstars. Okay, superstars are those people like who have become billionaires. Okay, from the stock market. You can see over here. You can see Radhakishan Damani, then sorry, Rakesh Jhunjhunwala, Radhakishan Damani. Okay, Sunil Sanghania. Okay, not only Indians, even international people you'll be able to find over here. All these things. Yeah. And you can see everything what they have done. Okay, so how was their portfolio performing over the years? Okay, currently which stocks they're holding in. Okay, kitna sale hua. Okay, how what was a bulk and block deals. Okay, inside our subs, all the information is there of every particular stock. Okay, so this information, if you see, like, okay, this I'm just showing you initially from where I got the information. Okay, so you'll be able to see Radhakrishna Damani over here. He's only person. Rakesh Jhunjhunwala. Okay, you can see everything. Okay, so you can see over here. Okay, so if you see, he's an investor. Okay, it's clearly mentioned investor and trader that manages a firm. So initially, they started as a trader, gained some capital, and then they started a company. Okay, wherein they can manage those funds. Okay, otherwise it was very difficult to manage those funds. Okay, and it's not only Rakesh Jhunjhunwala, any person you see, even Warren Buffett. Okay, initially when he gained some amount, okay, then he started a company wherein he can manage those funds. Okay, so initially they started as a trader. Later on, they moved to an investing way of investing. Okay, wherein from there they doubled or tripled their initial investment. Okay. Yeah, it So did. thank you. Okay, so the now last question of this presentation, and after this we'll close. I know it's always 8:20. अब सबको हो गया कि यार ऐसा करना है, नाउ ऑलवेज नोस कि आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और मे बी यू नॉट एबल टू बिकम बिलियनर, बिकॉज हम यहाँ पर ये सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं कि आप बिलियनर बन ही नहीं सकते। यहाँ पर डिबेट यही थी कि हाउ टू बिकम इट। सो नाउ आफ्टर रीडिंग ऑल दीज पीपल इंटरव्यूज देयर आर्टिकल्स हाउ दे थिंक अबाउट द मार्केट, I got a very good soup for you.
उस सूप को इफ यू ड्रिंक इट एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आपको कैसे बन सकते हैं. सो अ सीक्रेट सूप आई एम एबल टू फाइंड फ्रॉम दीस आर्टिकल्स एंड देयर इंटरव्यूज. देयर मे बी नॉट अ एग्जैक्ट answer to this. There's not a, कि 1 + 1 = 2 होगा. This is my finding how they are able to do this. So my first point is that हम as a हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी ही रहती है कि लोन लेने से हम लोगों को डर लगता है. हमारे अगर ऊपर लोन है तो हमको डर लगता है, यार ये तो लोन है हमारे ऊपर. हमारे फैमिली को पता चल जाए कि हमने लोन लिया है, हम पे वो चिल्लाते हैं कि तुमने लोन क्यों लिया है, ये क्यों किया है. यू नो हमारे को लोन एक 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 बैड एसेट लिया जाता है. अगेन लोन की एक बहुत दो कैटेगरीज है जो कोई नहीं बात करता है, एंड दैट इज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ हाउ यू एबल टू बिकम पर्सन लाइक दिस. बिकॉज ये लोन को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करते हैं कि मेरे पास 40 लाख का लोन है. दे टेक लोन टू बिल्ड एसेट्स, और उसको फाइनेंस के टर्म में बेसिकली बोलते हैं लिवरेजिंग. ठीक है, उसको लिवरेजिंग बोलते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो लिवरेज की गेम समझते हैं. बट जो भी, अगर इफ यू टेक एनी काइंड ऑफ बिलियनर्स जो इन्वेस्टिंग से खड़े हुए हैं अपने स्टांस पे, leveraging is one of the most important ingredient for them to what they are as of now. अगर leveraging उनको नहीं समझ आती तो they could not able to become what Rakesh Jhunjhunwala or any kind of investor you take example. leveraging, अगर आप उनका पोर्टफोलियो स्टडी करोगे, उन्होंने पॉइंट पॉइंट टाइम पे कैसे अपने आप को कैसा कैश रखना, कैसे कैश को एक्स्ट्रा लाना वहां से. सो मैं यहाँ पर एक लोन को एक न्यू डेफिनेशन देना चाहता हूँ. लोन इज नॉट अ बैड. इफ लोन इज taken to build assets, to build something, then we call this as a leveraging. So मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ राकेश झुंझुनवाला ने नेवर टू लिवरेज बियॉन्ड व्हाट ही कुड हैंडल. सो यहाँ पर हमको क्या बतता है, यहाँ पर हमको क्या, इसके आर्टिकल से मैंने ये पता लगाया कि ही वॉज अ पर्सन हु लव्स टू टेक लिवरेज. अगर आप उसका पोर्टफोलियो रीड करो, उसने बहुत टाइम टाइम पे जब उसको पैसे की नीड पड़ी है, he had taken loan from the market, he had taken loan from various people, maybe he's from friends, maybe from banks, maybe from companies, and then he invested in the market. जब उसने 5,000 से एक डिसेंट अमाउंट बना लिया, मान लो उसने 5,000 से 1 लाख बना दिया, अब उसको बीच में लगता है कि मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, उसने स्किल सेट बना लिए, तो उसने 2 लाख रुपए का लोन लेके उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, एंड देन ही एबल टू बिल्ड इट. जैसे मैंने आपको दमन हाउसिंग फाइनेंस का एग्जांपल दिया, उसने 10 लाख शेयर्स बाय किए थे. गाइज अगर मैं आपको बता दूंगा 10 लाख शेयर्स आपको बाय करने उस प्राइस पे, आपको 236 करोड़ का बेट चाहिए. उस टाइम पे तो राकेश झुंझुनवाला के पास नहीं थी. हो एबल टू डू दैट, कैसे किया? और ऐसा कोई मुझे बोल नहीं सकता कि उसने एक्टिव ट्रेडिंग की है, उसने इंट्राडे किया, उसने 6 दिन होल्ड किया था. तो 236 करोड़ उसके अकाउंट में कैसे आए? कि लिवरेजेस, उसने ब्रोकर से बात करके वो पैसा लिवरेज किया, एंड देन ही इज एबल टू अर्न 15.76 करोड़ फ्रॉम दैट बेट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि लोन लेके ट्रेडिंग करो. आई एम सेइंग कि अगर इफ यू अंडरस्टैंड दिस गेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू बिकम अ पर्सन लाइक दिस. आपको लोन का सिस्टम समझ आना चाहिए, हाउ यू हैंडल दिस काइंड ऑफ बेट्स. और देखते हैं, ये कभी भी एक बेट पे काम नहीं करते थे. इमेजिन करो कि अगर उसने, राकेश जिद्दवाला ने या इस टाइप के लोगों ने अगर एक स्टॉक पे बेट कर भी दिया है, अगर मान लो इनका टोटल स्टॉक वैल्यू इज, इमेजिन करो 10 करोड़ रुपीज है, अगर इन्होंने एक स्टॉक पे अराउंड अराउंड 50 लाख का बेट कर भी दिया है, सो इनका जो बाकी 9.5 CR का जो पोर्टफोलियो बचेगा, वो बाकी स्टॉक्स कवर करेगा. तो अगर एक स्टॉक उनके उनके बेट के अगेंस्ट चला भी जाता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. ट्रेडिंग इज नॉट इजी एज वी हर्ड इट. अभी जस्ट हमारा एड्रिन ने बताया कि सिर्फ 1 लोग कमा पाता, उसका भी उसका अर्निंग एट नेट नेट 0 ही है. तो हम ऐसी एक स्किल की बात कर रहे हैं. तो वो भी एक बेट उसका लूज होगा, ऐसा नहीं होगा उसका पूरा पोर्टफोलियो चला जाएगा. तो दे अंडरस्टैंड डाइवर्सिफिकेशन अप टू द कोर लेवल. दे अंडरस्टैंड कि वो हर बार सही नहीं हो सकते. जब वो गलत होंगे तो वो कुछ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को, ना कि पूरा पोर्टफोलियो जीरो करते. बिकॉज आई हैव आल्सो सीन लॉट ऑफ पीपल हु बिल्ड 20-30 लाख से 1 करोड़ चले गए हो, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म में. क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो पैसा कैसे होल्ड किया जाता है, कैसे उस पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है. सो आई बेसिकली प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट में मैंने लिवरेज की गेम समझाई, एंड देन आई टॉक अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन, हाउ यू नॉट put all your money in single basket. The second part is long term conviction.
वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आना चाहिए कि इन सब इन्वेस्टर्स ने, इवन वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला और डीमार्ट का जो फाउंडर है, ही दे हैव सीन लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। 1992 का जब रशियन डिफॉल्ट हुआ था, 1998 में, 2001 में डॉट कॉम बबल क्राइसिस हुआ था, 2008 में लेमन क्राइसिस, और इवन 2020 में जब कोविड क्राइसिस भी आया है। तो इन्होंने बहुत सारे क्राइसिस देखे हैं, उन्होंने मार्केट में क्रैशेस देखे हैं कि कैसे मार्केट गिर जाती है 20-30%। बट हाउ दे एबल टू हैंडल दिस? दे बेसिकली बिलीव दैट बैड टाइम्स आर गुड टाइम्स फॉर दोज हु कैन सर्वाइव। राकेश झुंझुनवाला की हर बार एक इंटरव्यू में आपको एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, और आपको इसको सीखना चाहिए इवन इफ यू वांट टू बिकम ट्रेडर और इन्वेस्टर, कि जब मार्केट में क्रैश आता है तो वो क्या, उन्होंने हमेशा बोला कि क्या कंपनी की सिचुएशन चेंज हुई है और सिर्फ स्टॉक प्राइस गिरा है। यहां पर एक बहुत सिंपल सा लाइन है। मान लो कोविड में हमने बोला कि ट्रैवल एजेंसी में क्रैश आ गया। मान लो गो आईबीओ का स्टॉक है, गो आईबीओ का स्टॉक 40% क्रैश कर जाता है। अब दीज पीपल, ये लोग जो ऐसे लोग हैं, ये लोग क्या सोचते हैं? ये देखेंगे उस कंपनी में, गो आईपीओ में जाएंगे, देखेंगे फंडामेंटल रीड करेंगे, उनके मैनेजमेंट रीड करेंगे, क्या कंपनी में कुछ ऐसा बदलाव आ गया है कि जिससे कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। इफ दे फील दैट they can't survive, then they will exit from the position. If they feel that कि सिर्फ कंपनी में कुछ टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बस स्टॉक प्राइस ने क्रैश किया है एंड कंपनी फाइनेंशियली साउंडली बहुत परफेक्ट लग रही है, आई जस्ट नीड कि मुझे पैनिक सेलिंग नहीं करनी, बाकी लोगों को निकलने दो, दे विल होल्ड ऑन, और समटाइम दे पुट मोर मनी एट अ लोअर लेवल, एंड देन व्हेन द प्राइस राइजेस दे अर्न ह्यूज अमाउंट फ्रॉम दैट। सो बेसिकली जब लोगों के लिए बुरा टाइम होता है तो उनके लिए गुड टाइम होता है, जब लोगों के लिए गुड टाइम होता है तो वो स्क्वॉशनेस हो जाते हैं। तो वेरी फेमस लाइन फ्रॉम राकेश झुंझुनवाला, और इवन वॉरेन बफेट ने भी इसको बार बार बोला है कि क्या स्टॉक प्राइस मैटर नहीं करता कि 20% स्टॉक गिर गया, क्या कंपनी की वो फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी खराब होगी है जेन्युइनली? अगर ऐसा केस है तो देयर इज अ रियल प्रॉब्लम। एंड लास्ट, सेफ गार्ड ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। सो मैं भी इस पे बहुत बिलीव करता हूँ। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, मेरे को मेरे बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं यार। तू क्या कमाएगा यार, तूने एचडीएफसी में सिर्फ 22% रिटर्न कमाया, कोविड से जब गिरा एचडीएफसी ने सिर्फ 22% रिटर्न दिया। मैंने तो ये स्मॉल कैप लिया था, इसकी सिर्फ मार्केट वैल्यू 5 करोड़ मार्केट कैप थी, इसने मेरा 10 रुपए का स्टॉक, ये चला गया 10,000 रुपया, मैंने तो इतना रिटर्न कमाया। तू क्या 22% और 20% पे टिका हुआ है? So I basically discard these kind of people. I feel that they are just doing gambling, because we as a trader understand कि 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपए जाने तक तो इसको होल्ड करना ही इम्पॉसिबल होता है, आप होल्ड नहीं कर पाते हो। अगर आप कर भी लोगे तो बहुत रेयर चांसेस है कि दैट यू आर एबल टू कैच दिस काइंड ऑफ स्टॉक। इसके लिए बहुत ह्यूमंगस स्किल सेट, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, एंड वेरी रेयर। आप 1000 स्टॉक बाई करोगे तो आपको एक जैसा गोल्डन स्टॉक मिलेगा। वन ऑफ माई राइट। प्रोफेसर से दिस कि अभिषेक मेरे पास 70 स्टॉक्स हैं और मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग 15 लाख से, आज मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू 22 करोड़ है। माय एमबीए प्रोफेसर, बट ही सेड कि देयर इज ओनली वन स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो का 90% मुझे प्रॉफिट देता है। मेरा 22 करोड़ का जो पोर्टफोलियो वो 90% मेरा उसी स्टॉक के कारण है, दैट इज सारेगामा। ही हैज कैश सारेगामा एट 2 रुपीज, नाउ सारेगामा इज ट्रेडिंग एट 700 रुपीज। बट द आइडियल आंसर इज दैट हाउ ही इज एबल टू डू दैट? ही इज एबल टू डू दैट बिकॉज उन्होंने बहुत सारी मार्केट में पहले स्टॉक्स खरीदे, तो जाकर उन्होंने एक स्टॉक पकड़ लिया। दैट इज व्हाट ही इज एबल टू डू दैट। और मैं यही बिलीव करता हूं कि अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक पकड़ा है जिसपे उसके आपको हाईली बिलीव है, वो कंपनी स्ट्रांग है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसके लोग स्ट्रांग है, उसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो आपको उस स्टॉक को, एक हाई क्वालिटी स्टॉक को आपने कंसिडर कर लिया, डेफिनेटली एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम जब भी क्रैश आएगा वो आपको हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा सस्ते प्राइस पे खरीदने के लिए और महंगे प्राइस पे बेचने के लिए। सो दिस इज माय सू फॉर दिस, हाउ दिस पीपल एबल टू यू नो build huge capital from investing or even from trading, how they do that. This is their soup from their articles or their the key finding I'm able to find it. So yeah, I'm open to questions, anyone can ask. आपने जो एक सिचुएशन बताया हम्म है ना, कि मैंने तो 10 रुपए का शेयर लिया और 500,000 10,000 चला गया, हम्म जो भी है। हम्म, मेरा रिलेटिव है, उसने भी 50 रुपए में एक शेयर लिया, तो हाँ उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा। हाँ 2021 में 50 रुपए में शेयर लिया, आज उसकी हम्म, वैल्यू 600 रुपए है। हाँ ठीक है, अब ये सुन के आपको कैसा लगेगा? और उसने दिखाया भी, हम्म, बहुत बढ़िया लगेगा कि क्या क्या हम्म, जबरदस्त शेयर पकड़ा है ना। हाँ 600 रुपए गया। फिर हम्म, बाद में बस इतना पूछा कि भाऊ तुमने कितने क्वांटिटी लिए, तो भाऊ बोले हम्म, 10 क्वांटिटी लिए। अच्छा
अब वो 10 क्वांटिटी में 600 गया कि 10,000 गया मैटर नहीं तो करता, हाँ क्या मैटर क्या करता है कोई मैटर। क्योंकि उसके क्वांटिटी जो है ना वो निग्लिजिबल क्वांटिटी है। हम्म अगर वही उसने अगर 1000 क्वांटिटी लिया रहता तो हम्म 50 रुपए में अगर लिया रहता तो 60 पे बेच दिया रहता था, हाँ क्योंकि फिर उसकी फटती थी कि यस। अगर ये थोड़ा नीचे भी आया ना भाऊ वो 60 रुपए अभी 55 आ गया, उसको बेच बाच के अगर निकल जाया रहता तो 5 रुपए बच गए रहते, तो तो उस चक्कर में वो निकल जाता था। तो ये जो तो लोग जो बोलते हैं होल्डिंग करने वाले, उनके पास क्वांटिटी नहीं रहती है ज्यादा, इंद्रजीत, लेकिन इसका दिखता। सिंपल हाँ सा आंसर है, बहुत सिंपल सा हाँ आंसर मैं दे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो बेसिकली जब उसने वो स्टॉक परचेज किया, हाँ तो मैं सच बताता हूँ, ही हैज नॉट सीन एनीथिंग अबाउट द कंपनी। ना उनको कंपनी के बारे में पता है, ना उनको कंपनी के मैनेजमेंट पता, ना उनको फंडामेंटल, उनको कुछ नहीं उसको पता। उन्होंने वो बस आइडिया प्राइस है। देख लिया, सस्ता देखा, हाँ लेट मी कंप्लीट बस। माय पॉइंट, सस्ता देखा और हाँ खरीद लिया। और सिंस जब आप तुक्का लगाते हो, आप गैम्बलिंग करते हो, तो आपको आपको जो भी सस्ते स्टॉक्स दिखते हैं आप सब बाई कर लेते हो। बट आपके पास हम्म, कैपिटल लिमिटेड है, तो आप सब में कुछ छोटा 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 अमाउंट डाल देते हो। दैट इज हम्म, नॉट ट्रेडिंग, दैट इज नॉट इन्वेस्टिंग, दैट इज प्योर गैम्बलिंग। आपने कोई कंपनी का कुछ नहीं, आपको कोई भरोसा नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। आपने बस एक हम्म, प्राइस लिया, सस्ता दिखा, आपने बाई कर लिया। और आप बड़ी क्वांटिटी में ले नहीं सके क्योंकि आप अमीर नहीं हो, आप 15-20 करोड़ नहीं डाल सके, आपने बस छोटा सा अमाउंट डाल दिया। अब वो 1000 जाए 15 जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम बिलियनियर। हाँ या एड्रियन और एनीबडी। Yeah, so actually, I agree to this point. Like when you're trading, okay, there's one stock in your portfolio because of which, okay, your portfolio goes up a lot. Okay, if you say, even say example of Rakesh Jhunjhunwala, okay, there was a title stock, okay, wherein he made a lot of profit with that stock, specific stock. Okay, so yes, so that is one thing. Okay, so yeah, so I don't go against this because that is what even I believe. Okay, from your overall portfolio, there's one thing, okay, which gives you the most returns, and that is what takes your portfolio up. So I think we'll open this to the audience only if they have anything else, what they could say. Anybody in the audience want to share their view, want to share or want to say anything about that वेबिनार से या डिबेट से पहले उनका क्या परसेप्शन था, और आफ्टर होल दिस डिबेट लाइक व्हाट एड्रियन एंड अभिषेक हैव डिस्कवर द थिंग्स, और जो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट रखे, व्हाट एवर दे हैव लाइक एक्सप्लेन, अभी व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज थिंग, कि अभी क्या है जो पहले था, अभी चेंज हुआ है पर्सपेक्टिव या चेंज नहीं हुआ है? एनीवन वुड लाइक टू लाइक शेयर देयर व्यू फ्रॉम द ऑडियंस? एनीवन? Like I can see that 17 people out there, including us. Is there anyone wants to share their view that what they were thinking initially, now what they are thinking, or is there any I change think in we the can take the perspective? names also. We can just take the name of Yes, some yes, people and just ask them what is their view on this debate. yes. So like yeah, Chaitanya, Kunal, Nikhil, Prashant, Rahul, Rohit, Roy, Rutuja, Sumit, Sunil, anybody? Yeah, Yeah, hi. Hi. So it has Yes, Roy. been, yeah, so it has been quite an enlightening debate, and I truly believe that if you have small capital to invest, first you need to one has to develop some trading skills, and by which he can grow the capital to some extent. Let's say that some extent can be at least between 3 to 5 lakh, and then he can. Set aside a portion of that capital, let's say 2 to 3 lakh of that 5 lakh for long-term investing, and go ahead with the rest of the amount for trading. So in this way also, I think one can, include a mix of trading as well as long-term investing, by which he can accelerate his growth, his total corpus, and through which I think within 15 to 20 years at least, he can reach a significant amount.
Okay, right. So, Sunil, is there Sunil anyone? had anything to say? Sunil. No, I don't have anything to say. Yeah. Okay. Hey Abhishek, Sumit. this all research is all about equity, na? Not option trading. We are not considering case. See, when we talk about trading, we are talking about equity. We are not talking about options. Okay, yeah. Because I'm asking that some of the videos on YouTube, you can see the thumbnails 1 lakh to 1 crores. What do you say about them? I feel that it's important to investigate these people because, as per my knowledge, I've never seen a person, doing that. If we again, there is counterpoint of every point of that Hmm. question. If they are able to do that, their long-term longevity needs to be taken care. Like कितने लंबे तक hold कर पाए उस पैसे को, that is again because I know one of the guy घनश्याम, ही उसने start 10 लाख से start किया था YouTube में. He is able to build 2 crore rupees. बट देन जब उसका ऑडिट हुआ, लोगों ने जब उसका बैलेंस शीट चेक किया और पब्लिकली अवेलेबल हुआ, देन वी गॉट टू नो दैट कि बाय द एंड ऑफ ईयर उसने 3-4 मंथ में कर दिया था ये. ही वाज इनटू लॉस ऑफ 5 CR. तो अगेन ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन दैट मनी बिकॉज वी बिलीव दैट ऑप्शंस आपने कमाया तो तुक्के से लग गया होगा, बट यू आर नॉट एबल टू मेंटेन इट फॉर लॉन्गर पीरियड. Okay. But this is possible in option, right? Yeah, of course, it's possible in option. Options may see we can take example of Jane Street. Now, Jane Street is a kind of company who's doing purely options, and that's why they build huge money. But 36,000 crore they have but earned not a it. retailer can do it, ना? एक normal retailer Uh, तो नहीं कर सकता इतना. uh, very rare cases. No, chances of slightly 0.01% if somebody has done it. Because even I will tell you, even if a retailer has done it, he will never come to the public because there might chances that his position can be, taken care by others players. So it's very difficult to find these kind of people, but very rare. Not possible Yeah. with the I retailers. also did. मैंने भी 5,000 से स्टार्ट किया था ऑप्शन, तो 5,000 से 1 लाख तो किया है मैंने. अच्छा. आई टोल्ड यू अबाउट दैट, राइट? 5,000 से 1 लाख हो गया था मेरा. देन Okay. फिर वही आगे का सीन रहा कि ज्यादा ट्रेड किया तो फिर लॉस हो गया था. Sustaining is very important. एक बार आप राइट. बना लेते हो, what you did best with your skills, but sustain करना भी skills है. राइट. ठीक है. थैंक यू अभिषेक. Thank you, Sumit. I guess time has come. Nishant, it's already Yes, 8:40. Na, yes, let's find it. yes. So, guys, we are expecting that everybody's enjoyed the webinar or the debate what Adrian and Abhishek did. So, okay, guys, what today's understanding, I would like to in a very summarized way conclude that if we want to be a very wealthiest person in the stock market, so definitely we should have a trading initially, then we can build our wealth, right? That is what the conclusion today's debate, right, Adrian and Abhishek? Exactly. Yes. Yeah, okay, Yes. guys. So I guess that's it from today's debate. So, guys, we are signing off from today's webinar. See you on the next Tuesday with a different topic. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Thank you so everyone. much for joining us. Thank you, Thank you. everyone. Thank Thank you. you.